ఉద్యోగుల విభజన త్వరగా పూర్తి చేయాలని కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ను కోరారు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత. ఉద్యోగుల విభజన పూర్తి కాక రెండు రాష్ట్రాల్లో అభివృద్ధి కుంటుపడిందన్నారు. ఉద్యోగుల విభజనపై రాజ్నాథ్ సింగ్ సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు కవిత. జరిగితే పనిలో కనిపిస్తే తెలంగాణ ప్రజలకు బెనిఫిట్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదండి, ఏం చెప్పలేదు. అదే బాధాకరమైనటువంటి అంశం. ఒక టైం ఫ్రేమ్ చెప్పినట్టయితే బాగుంటుంది. जी, today the people of Telangana, everybody, like even the people of Telangana or the people of Andhra, want the division of the employees to happen as soon as possible. It has been 4 months now the state of Telangana has been formed, and the division of cadre, particularly it could be the national level IAS, IPS cadre, or it could be the state level, district level, multi-zonal, zonal level officers. Their division has not happened. In the lieu of the division of cadres not happening, there is not much activity happening in any of the departments of the state governments or the central governments, and many schemes that are being proposed from the central government or the state government are not being implemented thoroughly because of lack of employees or the officers. So this division has to happen as soon as possible, और वो जब डिवीजन हो जाएगा उसी के बाद स्टेट्स अपने अपने काम ढंग से कर पाएंगे. तो हमने आज होम मिनिस्टर से मिलकर बस यही रिक्वेस्ट किया था कि आप इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल डिवीज़न कर दो, और ये डिवीज़न इस हिसाब से होना चाहिए कि जो आंध्रा का एम्प्लॉय है वो आंध्रा में रहेगा, जो तेलंगाना का एम्प्लॉय है वो तेलंगाना में रहेगा, ताकि दोनों भी एम्प्लॉयज़ जी पर काम करेंगे, अपने स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे. अल्टीमेटली जब स्टेट्स प्रॉस्पर होंगी तभी सेंटर भी प्रॉस्पर हो सकता है, तभी एज इंडिया एज अ कंट्री कैन गो फॉरवर्ड. दैट वाज माय रिक्वेस्ट विद द सेंट्रल होम मिनिस्टर. क्या कोई एश्योरेंस दिया कितने टाइम फ्रेम? उन्होंने अनफॉर्चुनेटली टाइम फ्रेम का कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है, और हमने उनसे बहुत सख्त शब्दों में ये कहा था कि 4 महीने हो चुके हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाह रहे हैं. IAS IPS का डिवीज़न आज तक हुआ नहीं है, और जब तक ये डिवीज़न नहीं होगा दोनों भी स्टेट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगी. तो उनको इमीडिएटली इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रधानमंत्री जी आज ऐसे हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि जो भी फाइल उनके पास आती है वो रुकती नहीं है, लेकिन हमारी तेलंगाना की फाइल उनके पास आके 4 महीने से रुकी पड़ी है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है. हमारा